Hello everyone. Now in our mechanics of solid, today we are going to see our next chapter, simple stress and strain. Very most important chapter, simple stress and strains. So some content are included in this chapter. The first is stress, strain and elasticity, axial and transverse loading, prismatic and non-prismatic bar, composite and compound bar. Then second is deformation and stress in statically determinate structure. So deformation of a body due to self weight, stress in a bar of uniformly tapering circular section, deformation of body due to self weight यानी कि बार ऑफ linearly varying cross section, deformation of uniformly tapering rectangular section. Third is principle of superposition. Fourth is deformation in statically indeterminate structure. Fifth is deformation and stress in composite structure. And some exercise. So first of all, what is direct simple stress and strain? So first of all, as discussed earlier, simple or direct stress are developed due to axial force and the failure is either due to axial tension or axial compression. ठीक है कि व्हाट इज स्ट्रेस, सिंपल एंड डायरेक्ट स्ट्रेस वो कैसे डेवलप होगा? इट इज़ डेवलप बाय ड्यू टू एक्सल फोर्स. एक्सल फोर्स आएगा, उसकी वजह से मटेरियल फेलियर होगा. वो फोर्स एक्सल फोर्स कैसा होगा? टेंशन और कंप्रेशन. इट मे बी एक्सल टेंशन और एक्सल कंप्रेशन. Now we will study about deformation and stresses due to axial force in different structure in detail. The topic covered are stress, strain, elasticity and Hooke's law. अब हम क्या देखेंगे? डायरेक्ट स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेस के अंदर फर्स्ट इज स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी एंड हुक्स लॉ. सेकेंड, डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेसेस इन स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. Third, deformation and stresses in statically indeterminate structure. And last is deformation and stresses in composite structure. Direct stress and simple stress में क्या आएगा? First is stress, strain, elasticity and Hooke's law. Second, deformation and stresses in statically determinate structure. Deformation and stresses in statically indeterminate structure. Deformation and stresses in composite structure. So first of all, what is stress, what is strain and what is elasticity? तो first of all, elasticity. Elastic material किसे बोलेंगे? So it is the properties of a body to regain its original position after the removal of the external force. ठीक है, इलास्टिक मटेरियल कैसे किसे बोलेंगे? कि सपोज हमारे पास कोई स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को हम पुश करेंगे या पुल करेंगे. देन आफ्टर जो अप्लाइड लोड है, पुश और पुल को हम रिमूव करेंगे. एट दैट टाइम जो स्प्रिंग खुद की ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करेंगी, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. सो इट इज़ कॉल्ड इलास्टिक बॉडी. तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. इफ अ बॉडी इज इलास्टिक, इट वुड डिफॉर्म ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो डिफॉर्म भी होगा, बट एज सुन एज द फोर्स इज रिमूव, फोर्स को हम रिमूव करेंगे एंड इट्स कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी एंड डिफॉर्मेशन. सो मटेरियल इज क्लासिफाइड एज इलास्टिक मटेरियल, इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल एंड ब्राइटल मटेरियल. सो as per its elasticity and deformation, the material classified as elastic material, elastoplastic material, plastic material, ductile material and brittle material. The first is elastic material. What is elastic material? Elastic material किसे बोलेंगे?
if a material fully recover its original shape and size after removal of the external force, the deformation disappear completely after removal of the force is called इलास्टिक मटेरियल। कि सपोज हमारे पास कोई मटेरियल है, ये कोई मटेरियल है, उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स की वजह से बॉडी क्या होगी, डिफॉर्म होगी। देन आफ्टर रिमूवल ऑफ दी फोर्स, ये इसको हम रिमूव करेंगे, एट दैट टाइम जो मटेरियल खुद की ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करेंगे, कम बैक करेगा, सो इट इज कॉल्ड इलास्टिक मटेरियल। Then elastoplastic material, if the deformation exists partially even after the removal of the external force, the material is said to be elastoplastic. So the material come back to its original shape and size partially and some permanent deformation remain inside even after removal of the force. इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल किसे बोलेंगे कि सपोज कि कोई मटेरियल पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, एट दैट टाइम रिमूवल ऑफ दी फोर्स को हम रिमूव करेंगे, एट दैट टाइम पार्सली उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, तो इट इज सेड टू बी इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। So the material come back to its original shape and size partially and some permanent deformation remain inside even after removal of force. So it is called elastoplastic material. Then plastic material. Plastic material किसे बोलेंगे? So if a material does not regain its original shape and size at all or it remain deformed even after removal of external force, it is said to be plastic. प्लास्टिक मटेरियल किसे बोलेंगे? जो मटेरियल होगा वो डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, वो खुद की ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द लोड, एंड इट रिमेन डिफॉर्म इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, वो डिफॉर्म ही रहेगा ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। सो इट इज सेड टू बी प्लास्टिक मटेरियल। नाउ डक्टाइल मटेरियल। So what is ductile material? Till now we have studied material that can be drawn into wire, it is called ductile. In technical word, if the material undergo large deformation before failure, when tensile force is applied, it is called ductile. A wire is drawn by applying tensile force on a metal or passing through its small hole. Steel is a ductile material. Ductile material किसे बोलेंगे? कि टिल नाउ वी हैव स्टडीड मटेरियल दैट कैन बी ड्रोवन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टाइल। ठीक है, हमारे पास कोई भी स्टील वायर है तो उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, एक्सेल फोर्स, एट दैट टाइम लार्ज डिफॉर्मेशन अकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा बिफोर फेलियर थवा पहला एनु डिफॉर्मेशन थशे। व्हेन टेंसाइल फोर्स इज अप्लाई इट इज डक्टाइल मटेरियल। अ वायर इज ड्रोवन बाय अप्लाइंग टेंसाइल फोर्स on a material and passing it through a small hole. Steel is one of the ductile metal. Then brittle material. So if material does not undergo any deformation on application of force and falls due to the rupture, it is called brittle material. ब्राइटल मटेरियल किसे बोलेंगे? किसी भी ब्राइटल मटेरियल हो गया उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, एट दैट टाइम वो किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं होगा लेकिन ब्रेक हो जाएगा, फेल हो जाएगा और रैप्चर हो जाएगा। सो इट इज़ कॉल्ड ब्राइटल मटेरियल। सो ग्लास इज़ अ ब्राइटल मटेरियल। ग्लास इज़ अ वन ऑफ द ब्राइटल मटेरियल। इट ब्रेक्स इनटू द पीसीस ऑफ फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, फोर्स अप्लाई करेंगे एट दैट टाइम वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चॉक और अ ग्लास, it does not undergo any deformation before failure on application of force. So based on above classification, it is clear that strength of material is all about stress and deformation. ठीक है, मटेरियल की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंडेंट है? इट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज स्ट्रेस? On a body, when external force is applied, it undergoes some deformation and internal resisting force are set up. This resistance to force per unit cross sectional area it is called stress. ठीक है, किसी भी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे एट दैट टाइम वो सम डिफॉर्मेशन होगा एंड जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स वो क्या होगा, सेटअप होगा। सो दिस रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इट इज कॉल्ड स्ट्रेस।
So stress is equal to force upon area. P by A is equal to R by A. Sigma is equal to P by A. Stress is denoted by sigma, force P and area A. Now normally stress is expressed with Newton per unit is Newton per mm square. 1 megapascal is equal to 1 Newton per mm square. So in SI system, unit of stress is Pascal. Now stress is a tensor quantity, higher order vector. Okay? It is vector quantity because it have magnitude plus direction. So basically stresses are in two types, normal stress and tangential stress. Normal stress and tangential stress. However, there are 5 kinds of stresses: tensile stress, compressive stress. So it is also known as direct stresses. Then shear stress or tangential stress, bending stress or a transverse stress, shear stress due to twisting. So there are 5 types of stresses: tensile stress, compressive stress, shear stress or tangential stress, bending stress or a transverse stress, shear stress due to twisting. Now consider a section XX normal to the longitudinal axis of the member. Let the member be taken to consist of two parts A and B divided by the section XX. Now consider equilibrium of part. This part is subjected to external load P at one end, and in order to keep this part in equilibrium, the part B offer a resistance or a reaction R at a section XX. Similarly, part B is subject to external load P at a right end. In order to keep part B in equilibrium, part A offer resistance R at a section. So here figure is given. Suppose हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, एक प्रिज्मेटिक रोड है, उस पर फोर्स एक्ट करेंगे पी फोर्स, इस इज टेंसाइल फोर्स. तो टेंसाइल फोर्स की वजह से बॉडी की अंदर रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट हो गई. सो दिस इज द आर सेटअप होगा, एंड जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको रोकने की कोशिश करेगा. सो इट इज स्ट्रेस ई बाय ए. सेम हियर कंप्रेशन फोर्स इज गिवन. सो ड्यू टू कंप्रेशन फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स आर डेवलप इन द इंटरनल बॉडी ऑफ द इंटरनल body in the road, and it is the resisting force setup. So sigma is equal to P by A, force upon area. Now the state of stress is simple when the stress act in a one direction only. The state of stress is simple when the stress act in a one direction only. The state of stress is compound when two or more stresses are acting in a different direction. So this is the stress. So what is definition of stress? So on a body, when external force is applied, it undergoes some deformation and internal resisting force are set up. This resistant force per unit cross sectional area, it is called stress, force upon area, P by A अथवा तो R by A. Sigma is equal to P by A. Unit is Newton per mm square. Then types of stress, it is tensile stress, compressive stress, shear stress, also known as tangential stress, bending stress or a transverse stress, shear stress due to twisting. Basically stresses are two types, normal stress and tensile stress. Now next is strain. What is strain? So deformation per unit dimension, it is called strain. So strain is change in length upon original length. So it is delta L upon L. Strain has a no ratio of dimension. So strain has a unitless parameter. So if the stress is tensile, the corresponding strain is known as tensile strain. If the stress is compressive, the corresponding strain is known as compressive strain. If the stress is tensile, the corresponding strain is known as tensile strain. If stress is tensile, the corresponding strain is known as tensile strains, and vice versa. If stress is compressive, the corresponding strain is known as compressive strain. If the stress is shear, the corresponding strain is also as shear strain. Now elastic limit.
On a body, when external force applied, it undergo deformation and removal of external force, body return to its original shape. But for a given section, there is a limiting value for force up, and within which the deformation entirely disappear on removal of the force. The value of stress corresponding to this limiting force is called elastic limit. Now next is Hooke's law. When elastic limit, the stress is proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. It is Hooke's law. The sigma is proportional to eta. The sigma is equal to proportionality E into epsilon, where E is equal to modulus of elasticity of material which bears constant value for a different material. Now modulus of elasticity or Young modulus. So modulus of elasticity is defined as the intensity of stress which cause unit strain. So modulus of elasticity is equal to stress upon strain. So E equal to E upon sigma. So unit of E is equal to Newton per mm square. For a mild steel MS, E equal to 200 10 cube Newton per mm square. It is 200 gigapascal to 210 10 cube Newton per mm square. It is 210 gigapascal. Normally it is expressed as gigapascal. So 1 gigapascal is equal to 10 cube megapascal. It is 10 cube Newton per mm square.